जय जगन्नाथ जय श्रीराम प्रियंका सर स्टार्ट करंतु प्रभात सत्यपुरी शिवानी रितिका हेलो सर जय जगन्नाथ आउ सब पिला कुआडे गले 23 वाचिंग पढ़ापढ़ी तुम केमती चलती एग्जाम भी तुम अल्प दिन रही गलानी तो डेली तुम लाइव क्लास होची आई थिंक समस्त जॉइन करथिबो आज सारन क्लास थिला देन डेली बेसिस रे लाइव क्लास होची सब जगह जॉइन करू था एंड प्रिपरेशन पूरा भल से करो ए जो जेतिक दिन तुम गैप रहला एटा को पूरा भल से यूटिलाइज करो जहां बुला बुली करछो कि कोन करछो तो एबे जेतिक पीरियड रहला सेही पीरियड रे पूरा माइनरली पढ़ापढ़ी करो स्वरूप गुड इवनिंग तृप्ति सिप्रा देवीस्मिता शुभंकर ओके फ्रॉम बलांगीर शुभंकर मिश्र 36 वाचिंग तो टिके 50 हे जो माने देन हम इमीडिएटली स्टार्ट करिया संगे संगे जल्दी जल्दी शेयर करो एंड 50 हबो तो स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा जय महिषामती ओके तो चलो 50 वाचिंग स्टार्ट करिया तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन तो भाबी कि चलो कि हमें जेमती सब दिन डिस्कशन करे कि गोटे क्वेश्चन को नेकिरी कोन कोन क्वेश्चन हे परियो एंड ता मझे हम रैपिड फायर करिया बा जनरली फटाफट क्वेश्चन डिस्कशन करिया तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलो प्रथम क्वेश्चन देखो तुम पाखरे कोन अछि डाइजेशन रो क्वेश्चन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फूड ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम स्टोमक थिकोडोन सेरोसा दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को जोड़ियार अछि लंडा कोन पई बड़ो बोंकर डेथ हे जेतला सो सेति पई लंडा सर 200 रो केते रखिया पड़िबो बीएस एग्रीकल्चर सार्थक 200 रो तमरो डिपेंड करे तुम केते मार्क अछि 10th एंड प्लस 2 रे तो से ता ऊपर मार्क डिपेंड करे एमती तो कहि होबनी तो 200 बट तुम ट्राई करो 200 टू दैट इज 150 प्लस मार्क रखिया पई चलो कोन हो क्वेश्चन पल से पढ़ो गुड इवनिंग प्रणाम रंजिता शुभंकर रितेश आउ जो मन रहले 54 वाचिंग अलगा पिलंग सब शेयर करो एंड इमीडिएटली पिला जॉइन करो तो एंड क्वेश्चन आंसर दियो दैट इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम स्टोमक थिकोडोन एंड सेरोसा बी अर्चिता बी देखो दैट इज ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का एलिमेंटरी कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स देन दैट इज थिकोडोन कोन एम्बेडेड इन द जॉ बोन बा में दिस सेरोसा कोन दैट इज द outer layer of the visceral organ कहि परिया then human biomacromolecules converted to the simple substance stomach J shape that is biomacromolecules option B asuchi that is thicodont hochi D double I where is D double I D double I then option B देखो तापर मते एठी को how many salivary glands are there in your mouth केते पेयर रो salivary gland अछि फटाफट को आको नै कि कोन क्वेश्चन नै परिबो केते पेयर रो salivary gland अछि फटाफट को how many pairs of salivary glands are there good evening स्वरूप को आंसर को केते पेयर रो salivary gland जनरली लोकेटेड अछि 3 पेयर माइनर salivary gland and जदी एबनॉर्स gland को मिसिया that is 4 okay 3 पेयर parotids cheek रे अछि submaxillary submandibular and sublinguals that is below the tongue मते को कि what is the pH of salivary juice what is the pH of salivary juice 6.8 or 1.8 or 7.8 what is the pH of salivary juice संजुला अर्चिता पायल अंजलि मोन रंजिता अंडरस्टैंड शॉर्ट्स 3 पेयर कोगी that is how much that is the what is the pH of salivary juice 6.8 1.8 7.8 6.8 which enzyme present in your saliva that is helpful for the digestion of carbohydrate that is 30% carbohydrate digestion ପାଇଁ को enzyme टा हमरो generally salivary juice रे located अछि which enzyme located in your salivary juice which is important for the digestion of carbohydrate को आंसर को 6.8 नेक्स्ट चलो को enzyme salivary juice रे located अछि that is सर किछि पढिनी एबे टू स्टार्ट करले सिलेक्शन होबना नै रिप्लाई प्लीज सर अंडर रिलेटेड सोर्स देखो एबे टू जे तो माइनरली पढुछो ताले जदी टिके प्लस 2 रे बेसिक क्लियर अछि ताले आराम से हे परिबनि काई हबो बी पॉजिटिव हबो भल से पढ़ा पढ़ी करो हबो हला salivary amylase देन को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम तोड़ा दड़ को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम पायल बढ़िया अछि शुभंकर अंजलि प्रियंका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम तृप्तिमय सुलग्ना शुभंकर मूनलाइट असंत अर्चिता शुभंकर आद्याशा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम and हम जानि छे that is the basic function of lysozyme to kill the antibacterial but to kill the bacteria so that it is called as antibacterial reagent the next question को that is where is the cardiac sphincter located and what is the function of cardiac sphincter just short रे को
जमा एते लिखिया दरकार नहीं, टिके खाली शॉर्ट्स रे को हम जानि देबी व्हाट इज द where is the cardiac sphincter is located. First question, where is the cardiac sphincter located? Hydrolytic enzyme, hydrolysis enzyme. मते कोइ कि where is the good evening destroy bacteria तृप्तिमय ठीक अछि श्रुति रेखा बढ़िया अछि को where is the cardiac sphincter located? What about को where is the cardiac sphincter located? Lysozyme pachali, that is it will kill the bacteria, not lysosome. Lysosome is a cell organelle which is otherwise called as the suicidal bag, जो कि hydrolytic enzymes are there, but generally lysozyme is a enzyme which is present in our salivary juice को चलिबो आद्यासाइड्स ओके to prevent the backward movement of food. आकांक्षा बढ़िया अछि, that is हमें कहया esophagus रो stomach रो first part भितरे there is a sphincter called as cardiac sphincter. Then मते को how many layers are there in the alimentary canal? Generally alimentary canal बा GI tract mouth to anus भितरे केतेना layer अछि? How many layers are there in alimentary canal? ठीक अछि, esophagus and stomach स्मृति सुलग्ना बढ़िया अछि. Next question चलो प्रियंका ओमकार, how many layers are there in alimentary canal? 3 layer, 7 layer. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. According to NCERT, that is the 4 layer of alimentary canal. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. Then what ko in which layer of the stomach ro ko layer generally gastric gland is located? In which layer gastric gland is located? Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. 4 layer. Chalo next question chalo. In which layer the salivary in which layer the gastric gland is located in the stomach? भूमिका, श्रुति रेखा, सिप्रा, एक्सपीरियंसी, खुशी बढ़िया अछि समस्ते. नेक्स्ट श्रद्धा किटू, शुभस्मिता. In which layer of the stomach gastric gland is located? Mucosa, Subhasmita, perfect, that is the mucosa. Then मत को what is the pH of gastric juice? What is the pH of gastric juice? धड़ा धड़ा लिपिका, पायल बढ़िया अछि लिपिका, आद्यासा. What is the pH of gastric juice? 6.8, 1.8, 7.8. What is the pH of gastric juice? 6.8, 1.8, 7.8. 1.8, that is highly acidic. बढ़िया अछि ओके. तापर मते को कि that is what are the hormones which are released from the pancreas? को हार्मोन ता जनरली pancreas रिलीज हुए एंड का ए सो हार्मोन जो pancreas रिलीज होय ता भीतर कोटा को हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन बोली कहया. What are the hormones that is released from the pancreas and so hormone vitru which hormone is called as the hyperglycemic hormone? को आंसर दियो फटाफट. इंसुलिन बढ़िया अछि भूमिका, that is pancreas रू हार्मोन रिलीज हुए इंसुलिन, ग्लूकागन and somatostatin, and हम जानि छे इंसुलिन that is the hyperglycemic hormone. अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल. शुभंकर अल्फा सेल ग्लूकागन, बीटा सेल इंसुलिन and डेल्टा बा गामा सेल जोटा कहछो somatostatin. And हम जानि छे that is the hyperglycemic hormone होची glucagon. Next question चलो. Question answer दियो. Question number 2. सेही डाइजेशन रो क्वेश्चन अछि. अक्सा, प्रियंका, शुभंकर 59 वाचिंग आउ सब पिला कोडा गले जल्दी जल्दी आंसर दियो. क्वेश्चन नंबर 2. Duodenum, epiglottis, glottis, cecum. हमें जानि छे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस. हजार थरे क्वेश्चन करलेनी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को तुमको दैट इज जॉइन करियर अछि. कोन आंसर? पायल, असंत, प्रियंका, रुबिसा, शुभलक्ष्मी, आशा, ज्योति प्रकाश, सरस्वती, श्रद्धा किटू, तृप्ति, शुभंकर, आद्याशा, सार्थक, शुभंकर, एक्सपीरियंस, सरस्वती, खुशी. कोन आंसर? दैट इज हमें जानि छे समस्त का आंसर सी. ओके जानि छे दैट इज व्हाट कोड वाला क्वेश्चन. ओके तो हम माने जानि छे दैट इज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज कॉल्ड एज opening of wind pipe is called as glottis. So opening of wind pipe is called as glottis. Then cecum hoji that is small bind sac. Epiglottis hoji cartilaginous flap. Duodenum ta according to book that is the C shape structure. Duodenum hoji C shape हैला not U shape. तो कौन हैला duodenum होची A triple I. Where is A triple I? A triple I option C. बढ़िया समस्त का आंसर C अछि. रितेश, मूनलाइट, विजयलक्ष्मी, ज्योति, शुभस्मिता, सिप्रा, तृप्तिमयी, सुलग्ना. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. व्हाट एंजाइम गुडा को जोड़ियार अछि. दैट इज को एंजाइम गुडा का काहा को डाइजेस्ट करे? व्हिच एंजाइम्स आर
important to digest each one देछि तो साइट रे देछि दैट इज को फूड बा को फूड पार्टिकल्स को एंजाइम गुडा को जनरली डाइजेस्ट करे लाइपेज का डाइजेस्ट करे कोन आंसर लाइपेज न्यूक्लियस कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाइपेप्टिडेज को मूनलाइट आद्याशा प्रियदर्शिनी लिपिका 3D that is हमें जानी चाहिए lipase is important for the digestion of fat or lipid. Then हमें जानी चाहिए nucleus is important for the digestion of a nucleic acid जोटा कि DNA and RNA. Then हमें जानी चाहिए carboxypeptidase is important for the digestion of a protein, peptone and protease. Dipeptidase is important for the digestion of a dipeptides. ताले कौन है आंसर that is lipase A I. Where is the option A? Then B nuclease is nucleic acid B triple I. Where is B triple I? Then C that is carboxypeptidase important for the IV C IV that is option D सम जो मानकर आंसर D से मानकर ठीक रितेश A नो D हैला तापर मते को ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन procarboxypeptidase these are the enzyme secreted from pancreas and secreted from liver na secreted from stomach na secreted from saliva trypsinogen chymotrypsinogen procarboxypeptidase these are the enzyme secreted from stomach na pancreas na liver को कोन हबो क्वेश्चन सुनो ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन पैनक्रियास राइट आकांक्षा मोनलाइट शुभस्मिता सिप्रा बढ़िया अछि दैट इज हम जानि छे पैनक्रियास पैनक्रियाटिक एंजाइम एगोडा सब तापर मते को दैट इज bile duct is associated with liver or gallbladder bile duct is associated with liver or gallbladder bile duct is associated with liver or gallbladder पानी अछि रे बोतल रे कोन आंसर दैट इज bile duct हमें जानि छे लिवर रे बाइल रिलीज करे एंड bile duct एक आसे दैट इज bile duct is associated with liver then gallbladder so that is कोन cystic duct मन नाही एटा that is हमें पढितले डाइजेशन बेले suppose this is the structure of liver and generally liver release हुए कोन ना bile टा जो duct देके आसे that is called as bile duct then here is the gallbladder bile टा स्टोर हुए gallbladder रे and gallbladder जो duct रे that is called as cystic duct बेले बेले लोक मानकर that is gallbladder को remove करा जाय due to the gallstone देखिथिबो that is patient मानकर gallbladder टा को ही remove करा जाय तो generally तो से लोक माने कोन generally लाइफ स्टाइल जीवन भीतर कोन केबे भी फैट खाइबेनी तांकू जेतबेले गोटे लोकर गॉल ब्लैडर रे दैट इज स्टोन हेतिबो बा गॉल स्टोन हेतिबो तो हम माइंड रे क्वेश्चन आसे कि तो से स्टोन को हमें रिमूव करि पारते कोन भाई हमें टोटली पर गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दोचे तो जनरली यदि हमें से गॉल स्टोन को रिमूव करिया तो बहुत सारा चांसेस अछि अगेन भी स्टोन हेई पारे गॉल ब्लैडर सो दैट कोन ना डायरेक्टली हम यदि गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दवा ताले कोन हो ना काम शेष बट माइंड रे क्वेश्चन आसे हम जानि छे बाइल टा सिक्रेटेड करिवो लिवर एंड स्टोर करिवो गॉल ब्लैडर and bile रो काम होची जानि छे that is the emasculation of fat और हम कहि पारे for the digestion of fat बा फैट को डाइजेशन करे रे बाइल रो मुख्य भूमिका अछि तो जदी हमरो गॉल ब्लैडर टा बाइल को स्टोर करे एंड गॉल ब्लैडर को हम रिमूव कर दोचे तो सेही बाइल टा आ काम करि परिबो ना काम करि परिबोनी ए भले माइंड रे भी क्वेश्चन आसे देखो स्ट्रिक्टली हम जानिया जेतबेले हम जनरली जेतबेले गॉल ब्लैडर टा गोटे पर्सन रो रिमूव कराइ जिवो तो लिवर ऑटोमेटिकली जानि दबो कि ऑलरेडी गॉल ब्लैडर रिमूव हेई सारछि किछि दिन गला परे इमीडिएटली तो जानि परिबोनी किछि दिन गला परे 3 मास 4 मास परे लिवर ऑटोमेटिकली सिग्नल पहुंच जिवो दैट इज लिवर कोन करिवो ना गॉल ब्लैडर जो काम करथिला बाइल को कंसंट्रेट करथिला तो लिवर कंसंट्रेटेड बाइल सिक्रेट करिवो आउ गॉल ब्लैडर को न जाई भी से बाइल ता जाई कि फैट को डाइजेस्ट कर परिबो बट किछि दिन पर्यंत मासे 2 मास 3 मास पर्यंत से जो पेशेंट को कहा जिवो कि तमे फैट रिलेटेड जिंस न खाया पई बिकॉज़ इमीडिएटली जेतु गॉल ब्लैडर रिमूव होइतिबो सो लिवर रो कंसंट्रेटेड बाइल सिक्रेट हबोनी किछि दिन गला परे लिवर ऑटोमेटिकली जो काम गॉल ब्लैडर करथिला बा बाइल को कंसंट्रेट करथिला तो लिवर ऑटोमेटिकली कंसंट्रेटेड बाइल ही सिक्रेट करिवो एंड अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड बाइल टा जनरली जेंति फैट को डाइजेस्ट करे एंड माइंड रे क्वेश्चन आसे गॉल ब्लैडर को रिमूव न करी कि काहे कि हमें गॉलस्टोन को रिमूव न करी गॉल ब्लैडर तो गॉलस्टोन को रिमूव जदी हमें न करिया देन अगेन दैट इज गॉलस्टोन भी हेई पारे स्टोन को जदी रिमूव करिया गॉल ब्लैडर को छाडी दवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो pneumotoxic center is present in where is the pneumotoxic center is located priyanka shruti rekha shraddha kitu trupti hirana maya bhumika harihar subhankar
सिस्टिक, शुभलक्ष्मी, शिप्रा, शुभंकर, तृप्ति, अर्चिता, श्रद्धा किटू, शुभस्मिता, शुभस्मिता लेखा, सज्जुला, दीप्ति, आक्सा, शिवानी, एक्स प्रियांशु, आद्याशा। कौन आंसर? न्यूमाटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड। आंसर दियो। न्यूमाटॉक्सिक सेंटर टा जनरली कोठी लोकेटेड अछि? पॉन्स। बढ़िया क्वेश्चन। दैट इज द न्यूमाटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन द पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमको एठी पचारे जीवो, दैट इज respiratory rhythm center is located. Where is the respiratory rhythm center located? कौन हबो? respiratory rhythm center. Where is the respiratory rhythm center is located? respiratory rhythm center टा कोठी लोकेटेड अछि? कौन हबो? मेडुला ऑब्लिंगेटा ना सेरेबेलम, विजयलक्ष्मी, गायत्री, मेडुला। That is the respiratory rhythm center is located in the medulla oblongata. Medulla oblongata is a part of forebrain na midbrain na hindbrain? Medulla oblongata is a part of forebrain or midbrain or hindbrain? कौन आंसर? That is perfectly answer दियो। medulla oblongata, this is the part of शुभंकर, उसका pons. It is also helps in message reading and control the recaption. Am I right? Oh, it also helps in message reading and control the respiration कहि परिया। तो that is medulla oblongata is a part of hindbrain. Next question चलो। तो ता पूर्व तुम पे गोटे छोटो अनाउंसमेंट अछि, दैट इज 3000 रो एमसीक्यू तुमको प्रोवाइड करा अछि, जोटा कि 10 टा ओयूटी पई तमरो मॉक टेस्ट एंड जहार प्राइस होछि दैट इज 500 मिनिमम प्राइस। जदि हम गोटे फोन रे रिचार्ज कर दोजे, जियो पे रे रिचार्ज तो 399, 499, 500 टका। तो जदि जो माने सीरियसली प्रिपरेशन करछथि तो सेमाने को मे भी बहुत सारा हेल्प हे पारिबो। जदि 500 टका देकी तमे दैट इज मॉक टेस्ट को एनरोल करछो। आ मॉक टेस्ट को तमे केमती एनरोल करिवो, दैट इज गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा जिवो। ए वीडियो रो लिंक तळे दिया हिची, तो तमे से गूगल फॉर्म को दैट इज फिल अप करिकरी तमे ए दैट इज जो अछि 500 टका रे 2000 एमसीक्यू ताको तमे पाई परिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम to suit the demand of the body tissue. This is done by endocrine system, excretory system, neural system, all of these. कौन हबो? को नंबर को पेमेंट करियो शुभंकर? से डिटेल्स जो गूगल फॉर्म दिया नि कि, तो सेतिरे तमे डायरेक्टली सब लिखाई दियो। तम ना तमरो दैट इज प्रिपरेशन सब लिखाई दियो, नंबर सेतिरे थिबो, देन सेतिरे तमे प्रिपरेशन करि परियो जदी इंटरेस्टेड अछ तो। हां, ऑनलाइन हे परियो एंड आल्सो ऑफलाइन भी हे परियो। जो गूगल फॉर्म दिया है सेतरे जीव तुम देखियो, थरे गूगल फॉर्म देखो तापरे करियो। आ जदी भी किसी से गूगल फॉर्म रिलेटेड डाउट बाहरियो कि केमती कोन भूल भाल होबो कि कोन होबो, देन जो नंबरटा जो तुमको शो करछि स्क्रीन रे, से नंबर को भी कांटेक्ट करिकरी तमे पाई परियो। ऑनलाइन टेस्ट हे परियो शुभंकर। कोन होबो? दैट इज न्यूरल सिस्टम। ऑप्शन बी न्यूरल सिस्टम रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ए सेंसिटिव एरिया situated adjacent to the respiratory rhythm center which is highly sensitive to dash and dash। पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन को कि हमें जानिचे that is the respiratory rhythm center is located medulla oblongata, pneumotoxic center is located in the pons area, and there is a center called as chemosensitive area which is situated adjacent to the respiratory rhythm center, and chemosensitive area ta highly sensitive to carbon dioxide and H+। कौन अब आंसर? 6D लिपिका, दैट इज ऑप्शन डी। केते जनकर डी ऑप्शन आछि? प्रियंका डी अछि, दीप्ति, गायत्री, मूनलाइट, अर्चिता, अंकिता, असंत, अजय, सुलग्ना, रिंकू, सिक्की, कृष्णा क्रिएटर, शिप्रा, स्मृति, आद्याशा, शुभस्मिता, शिवानी, स्वरूप, शुभस्मिता, तृप्ति, संजुला, श्रद्धा किट्टू, रंजिता, मूनलाइट, शुभस्मिता, शुभ्रांशु, शेखर। दैट इज डी। हमें जानी छे chemosensitive area which is adjacent to the respiratory rhythm center and chemosensitive area which is highly sensitive to carbon dioxide and H+। chemosensitive area and carbon dioxide, here is H+। next question चलो। during the cardiac cycle, बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। कार्डियक साइकिल को क्वेश्चन नहीं, कार्डियक साइकिल को पढ़ो। कौन हबो?
During cardiac cycle, about dash percent of ventricular filling occurs prior to the atrial contraction and dash percent ventricular filling occurs due to the atrial contraction. केते परसेंट ब्लड फिल होची टू द वेंट्रिकल prior to atrial contraction and केते परसेंट होची by due to the atrial contraction. Atrial contraction द्वारा केते परसेंट ब्लड फिल होची and normally केते परसेंट ब्लड फिल होची कोन हबो C. समस्त का आंसर कोन दैट इज A. आमे जानि छे during cardiac cycle about 70% of ventricular filling occurs due to the occurs prior to atrial contraction. This one is 70% and atrial contraction द्वारा 30%. जेतोले हार्ट ता नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज रे थाए जॉइंट डायस्टोल रे सेतोले ट्राइकस्पिड वाल्व देखि राइट एट्रियल रु राइट वेंट्रिकल को जनरली 70% बा वेंट्रिकल फील हो 70% विदाउट एनी atrial contraction without any atrial contraction but 30% blood will fill to the ventricle by the atrial contraction. This is the most important question. केते परसेंट blood fill हुए atrial contraction द्वारा that is 30%. Next question चलो. Which of the following events do not occur during the joint diastole? Joint diastole बेले generally कोटा हुएनी. प्रियंका सॉरी सर बी हबो ओ सर भूल हे गला पायल इट्स ओके पायल विजय लक्ष्मी अर्चिता हेला मन रखिबो से जेतबेले हमें जनरली जेतो 100% फीलिंग हेबो निकी ता भितरु 70% फीलिंग हेबो नॉर्मल सेमति रे विदाउट एनी atrial contraction but 30% ब्लड फील हेबो atrial contraction. ऑलरेडी एटा नीट रे पचार साची क्वेश्चन that is केते how much percentage of blood will fill to the ventricle by the atrial contraction. Atrial contraction द्वारा जनरली 30% ब्लड फिल हुए पूरा स्ट्रिक्टली माइंड रे मन रखो जेति आ परटर भूल न होबो जहां भी जा भूल होची एटी ताको रेक्टिफाई करो हैला. atrial contraction द्वारा बा बोथ साइड atrial जतले कॉन्ट्रैक्ट करिवो वेंट्रिकल 30% ब्लड फिल करिवो. ओके को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होबो इट्स ओके वास्सलाम वालेकुम सर सलाम वालेकुम सर 7 नंबर आउ थरे कहबे ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल 70% ब्लड ता नॉर्मल फील हेबो वेंट्रिकल को बट atrial contraction द्वारा ड्यू टू द atrial contraction 30%. एटा कोन आंसर भल से पढो क्वेश्चन को पायल अर्चिता अंकिता बी. एक्शन पोटेंशियल नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अकर इन जॉइंट डायस्टोल. देखो जॉइंट डायस्टोल बेला हम जानि छे ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड परफेक्ट लाइन पूरा परफेक्ट अछि. देन हम जानि छे ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल बा जेतोला हम हार्ट को रेस्टिंग स्टेज बोली हम कहूचे तो रेस्टिंग स्टेज बेले जनरली कोन हुए ना ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन थिबो परफेक्ट दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन and action potential conducted by resting stage re action potential ta nuho blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle that is the right ventricle and left ventricle. pulmonary vein देगिरी blood आस्तिबो towards the left and right ventricle pulmonary vein और vena cava देगी right ventricle and pulmonary vein देगी left ventricle blood आस्तिबो ठीक अछि perfect. Then the semilunar valve are closed. हम जानि छै semilunar valve को तार कोटा ही होबनी that is action potential C माने ऑप्शन B हैला. joint diastole बा जेतोला हम कहूचे जनरली रेस्टिंग स्टेज तो रेस्टिंग स्टेज बेले ए ही हुए ओनली C सुहानी विजय लक्ष्मी ऑप्शन B that is B ओनली C और B भीतर एमती कंफ्यूजन हे होची कमेंट देखि तो that is कोन ना ऑप्शन B and आंसर होची बी बट दैट इज ऑप्शन भितर होची सी. बढ़िया अछि तो मन बोला अच्छा तापर मते को कि व्हिच इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द हार्ट का को जाय हार्ट ऑफ हार्ट कोटा हरिहर सामंतराय सर मो मेसेज पढुची हरिहर शुभस्मिता शेखर शुभस्मिता महांती विजयलक्ष्मी सुभाष शेखर स्वरूप ना गुडा को पूरा मन रही गलानी. देखो तो जनरली आम लाइव क्लास करूचे एंड तुम मैंने ओयूटी प्रिपेरेसन होचो तो तुमर आ किछि दिन गला पर ओयूटी सरी जीवो बेसिकली तो दैट इज जदी भी तुमर देखो समस्त तो ओएल विशेष रहिबो ऑल द वेरी बेस्ट रहिबो कि जदी एग्जाम क्रैक हे होची देन बहुत भलो. जदी भी कोनसी पिलार अनफॉर्चूनेटली क्रैक होउनी तो जमा भी डिमोटिव होबार नाही
एंड जदि तुम दैट इज सीरियसली प्रिपरेशन करने चाहूच तो पार्शियल ड्रॉप नहीं परियो पार्शियल ड्रॉप इन सेंस कोन ना तुम कौन सी जगह ग्रेजुएशन एडमिशन करि परियो जोठी कि तुम केवल एंड केवल एग्जाम देवा को जीवो एंड 1 ईयर प्रिपरेशन हेई परियो एमिते नाही कि तुम एई एग्जाम रे हेलानी एंड तुम टोटली पर खत्म हे गला जदि प्रिपरेशन अछि इंटरेस्टेड अच्छो ओयूटी लाइन रे अगेन तुम सीट पाया पई ताले पार्शियल ड्रॉप नबे मु कहबी तो पार्शियल ड्रॉप नबा पई एथि पई ना तुमरो दैट इज जदि भी नेक्स्ट ईयर तुम डर नथिवो कि मु पूरा ड्रॉप नहीं गली बा गोटे वर्ष ड्रॉप नहीं गली जोटा कि मोर काले न हबो घर लोक प्रॉब्लम हेबे कि कोन हेबे घर लोक रागिबे तो से डरटा नथिवो पार्शियल ड्रॉप नहीं गले जे कोनसी कॉलेज रे तुम जदि ग्रेजुएशन एडमिशन कर दो बॉटनी ऑनर्स कि जूलॉजी ऑनर्स कि एनी ऑनर्स तुम जा फेवरेट तो एमती बहुत सारा कॉलेज अछि जो कॉलेज रे तुम एग्जाम दैट इज तुम कोल्डियन वाली सेमेस्टर एग्जाम देवा को जीवो तमरो अटेंडेंस एते मैटर करिवोनी तो सेही भलिया एग्जाम सेही भलिया कॉलेज रे तुम एडमिशन करि परिवो देन अल्टीमेटली एपटे प्रिपरेशन भी हे परिवो 1 ईयर तो ये होची सजेशन रहिबो जदी डिमोटिव होबार चांस नाही माय फेवरेट केमिस्ट्री ऑनर्स तमरो जो ऑनर्स तमरो फेवरेट से ऑनर्स नहीं परियो एंड जदी ए ईयर रे क्रैक हे जाउची बा जेहेतु तमरो इतरे क्रैक हे जाउची देन बढ़िया किछि असुविधा नाही तो हार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एसए नोड ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक इन नेचर ह्यूमन हार्ट दैट इज न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक कोन हबो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक इन नेचर आंसर कोन हबो यस केमिस्ट्री माय फेवरेट जूलॉजी शुभस्मिता ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर तापर मते को पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी डोर्सल आओर्टा वेना काभा ए जो ऑप्शन ओडा देली आउथरे कहूची पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन डोर्सल आओर्टा वेना काभा जनरली ए जो जेति कि सब ब्लड रो वेसल गुडा को कहली किए होचे जनरली ब्लड टाको आने लेफ्ट आर्टरी को फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन डोर्सल आओर्टा वेना काभा भितरु किए हेल्प करे ब्लड को लंग्स रु लेफ्ट आर्टरी को आनिया पे कोन हबो मायोजेनिक परफेक्ट अछि पल्मोनरी वेन डोर्सल आओर्टा वेना काभा पल्मोनरी आर्टरी एंको भितरु किए होची रेस्पोंसिबल टू कैरी द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरिया लंग्स रु लेफ्ट आर्टरिया बुलबुल पल्मोनरी वेन परफेक्ट पल्मोनरी वेन तापर मते को दैट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड will go to the right atria from the lower body parts by inferior vena cava or superior vena cava deoxygenated blood ta generally body ro lower part ro right atria ku jibo through superior vena cava or inferior vena cava kon answer pulmonary vein perfect that is lungs ru pulmonary vein hi carry karibo oxygenated blood ku towards the left atria that is inferior vena cava which valve is called as mitral valve tricuspid valve or bicuspid valve which valve is called as the mitral valve which valve is called as mitral valve inferior vena cava perfect which valve is called as mitral valve bicuspid valve then mate ko fast heart sound occurs due to the opening of tricuspid and bicuspid valve sentence ta correct achi or incorrect achi fast heart sound is produced due to the opening of tricuspid and bicuspid valve प्रथम हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुए ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपनिंग हवा फल रे कोन हबो ठीक ना भूल फॉल्स तार आंसर कोन दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व सेकंड स्टेटमेंट द हार्ट साउंड डॉब इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हार्ट साउंड डॉब ता प्रथमे प्रोडक्शन हुए दैट इज स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग फर्स्ट हार्ट साउंड डॉब एटा ठीक ना भूल फर्स्ट हार्ट साउंड ता डॉब ठीक ना भूल क्लोजर हेले बढ़िया अछि समस्तिंगर सिप्रा सुलग्ना मिट्टू विजयलक्ष्मी स्वरूप रितेश सत्यप्रिया विजयलक्ष्मी श्रेया संजुला सिप्रा पायल परफेक्ट दैट इज हम जानि छ कोन ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व फर्स्ट हार्ट साउंड इज डॉब एटा ठीक ना भूल प्रथम हार्ट साउंड फॉल्स दैट इज फर्स्ट हार्ट साउंड इज लॉब and first sound lob and second heart sound is dob the tapare next dob sound is produced due to the closure of semilunar valve or opening of semilunar valve second heart sound dob ta that is the opening of semilunar valve or the closing of semilunar valve ko valve ta open hele second heart sound production हुए ना semilunar valve close hele that is the during the closure tapare mate ko stroke volume into heart rate is called as cardiac output or stroke volume into heart rate is called as cardiac output
देन मते को that is which hormone is secreted from kidney which is important for the erythropoiesis option दोची which hormone is secreted from the kidney that is important for the erythropoiesis माने that is the process of formation of erythrocyte by RBC and option होची ANF and erythropoietin which one is important first heart sound is love and second heart sound is dove शुभंकर मिश्र ready cardiac output बढ़िया erythropoietin बढ़िया erythropoietin is secreted from kidney which is important for the erythropoiesis तापर मते को the area where is the food and the air get mixed together pharynx na larynx na trachea na alveoli को area रे generally food and air रो mix up हुए the area where is the food and the air get mixed together in our mouth that is pharynx or larynx or trachea or alveoli कोन हबो pharynx then मते को hepatopancreatic duct open to the duodenum and there is a sphincter located the name of the sphincter is cardiac sphincter or pyloric sphincter or sphincter of OD again I am saying the question the hepatopancreatic duct open into the duodenum and there is a sphincter is located and the name of the sphincter is cardiac sphincter na pyloric sphincter na sphincter of OD kon hobo sphincter of OD perfect then mate ko which hormone is responsible for the milk producing वो हार्मोन टा मिल्क प्रोडक्शन पे इंपोर्टेंट ऑक्सीटोसिन और vasopressin or prolactin milk producing hormone कोटा milk producing hormone कोटा तापर मते कोगी that is जो हमरो आमे जदी कहिया that is the mammary gland रो duct गुडा को जदी कहिया ml mt md ma एटा परफेक्ट ऑर्डर अछि ना mt ml ma md आको भितर कोटा परफेक्ट ऑर्डर अछि ml माने mammary lobe एमटी माने मामारी ट्यूब एमडी माने मामारी डक्ट एमए माने मामारी आम्पुला याको भितर कोटा परफेक्ट ऑर्डर अछि कोन हबो सॉरी सर prolactin is important for the milk production and the oxytocin important for the milk ejaculation then मन को that is which hormone is among चारटा ऑप्शन दोची which of the following option is important to increase the heartbeat prolactin thyroid stimulating hormone adrenaline na melanocyte stimulating hormone which hormone is responsible or which hormone is important to increase the heart rate heartbeat को बढ़ाए किए prolactin thyroid stimulating hormone melanocyte stimulating hormone ना adrenaline को हार्मोन टा जनरली हार्ट रेट को इंक्रीज करे adrenaline then मते को triiodothyronine and tetraiodothyronine which one is called as the thyroxine triiodothyronine and tetraiodothyronine which one is called as the thyroxine कोटा को आजिवो that is adrenaline बढ़िया अछि लिपिका परफेक्ट विजयलक्ष्मी श्रेया असंत गायत्री शिप्रा पायल तृप्ति बढ़िया टेट्रा लक्ष्मी टेट्राहाइड्रोथायरोनिन सार्थक मिटू शुभस्मिता एड्रेनालिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज जदि हम कहिया दैट इज ओविडक्ट रे जनरली को एरिया रे फर्टिलाइजेशन हुए इनफर्टिबुलम आम्पुला स्थिमस व्हिच इज द जोन ऑफ ओविडक्ट वेयर इज द फर्टिलाइजेशन अकर्स फर्टिलाइजेशन कोठी हुए ओविडक्ट रो कोठी फर्टिलाइजेशन हुए इनफर्टिबुलम आम्पुला ना आम्पुला स्थिमस ओविडक्ट इज अदरवाइज कॉल्ड एज fallopian tube generally ampulla isthmus junction तापर मते को which hormone is released from the corpus luteum which hormone is released from corpus luteum रो generally को hormone release हुए which hormone is released from the corpus luteum रो को hormone release हुए बढ़िया पायल मूनलाइट सुहानी सुलग्ना शुभस्मिता दीप्ति अभिषेक प्रोजेस्टेरोन is released from corpus luteum 56 वाचिंग एते पिला हमर कुआडे गले संध्या बेले पिला सोई पडुछन बोदे दैट इज प्रोजेस्टेरोन रेडी तापर मते को शुभंकर एड्रेनल ग्लैंड रो एड्रेनलिन आसीबो हार्ट को बढ़ाइबो जेहेतु एहा फियर एक्साइटेड हेवी वर्क परफेक्ट बढ़िया अछि शुभंकर रेडी अच्छा तापर मते को जनरली pre-synaptic neuron and post-synaptic neuron अंक भितरु where is the receptor is located generally गोटे neuron भितर जदि हम junction देखिया suppose this is the pre-synaptic neuron
and this is the post synaptic neuron. The presynaptic neuron and post synaptic neuron भितर receptor टा कोठी located थाए. Presynaptic neuron and post synaptic neuron, where is the receptor is located? कौन होगा answer? Where is the receptor is located? Post synaptic neuron. Then next question, where is the synaptic vesicle is located? Presynaptic neuron na postsynaptic neuron? कोठी generally presynaptic neuron na postsynaptic neuron? Where is the vesicle, synaptic vesicle is located? Suhana, synaptic vesicle is located in the presynaptic neuron. Synaptic vesicle भितर neurotransmitter उड़ा थाए. ये जो gap टा को कौन कहा जाए? Synaptic cleft. Synaptic cleft, that is the gap between the presynaptic neuron and the postsynaptic neuron, is called as synaptic cleft. तापर मते को generally organelle within the organelle कहा को कहया को organelle को हमें कहया organelle within the organelle. Endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome. Which organelle is called as the organelle within the organelle? कहा कहया perfect presynaptic neuron, postsynaptic neuron. Synaptic vesicle is present in the presynaptic neuron and receptor is located in the postsynaptic neuron, and the gap between the pre and post is called as the synaptic cleft. Ribosome is called as the, that is organelle within the organelle. 70S ribosome, which is seen in prokaryotic cell or eukaryotic cell? 70S ribosome is seen in prokaryotic or eukaryotic? What about को सातटा बेलू को हमें सरी जाइतो होला. सातटा पर्यंत पूरा पेशेंस रखो एंड क्वेश्चन को सब जगह सॉल्व करो आराम से. सातटा बाजियो हम सरी जाइतो. Then that is prokaryotic. What are the two subunit of 70S? 70S रो दीटा subunit कौन कौन? What are the two subunit of prokaryotic बा 70S रो subunit कौन कौन? 50S plus, that is असंत जेना, that is 70S राइबोसोम देखा जाए प्रोकैरियोटिक रे देखा जिवो, माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिवो, क्लोरोप्लास्ट रे देखा जिवो. प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, पीसीएम. प्रोकैरियोटिक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया देखा होतो राइबोसोम, that is 70S. पीसीएम रे तमे 70 मार्क रखो. ट्रिक होची that is पीसीएम रे 70 मार्क रखो. प्रोकैरियोटिक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, that is 70S राइबोसोम. और क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम, that is 80S. ओके, बढ़िया अछि. पीसीएम 70. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पीसीएम रे थोड़ी 70 रखियो, ठाकुर को डाको, दैट इज रिजल्ट बाहरले तमरो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एतरे पूरा उडे गिरी मार रखो, काहे ना जे तमरो ओयूट रे मार्क काउंट होउची. 4 या 6 कप कैसे एग्जाम तमरो एडमिट कार्ड जेतोले बाहरिबो तो जनरली सेतो बेले ही तमो जाना पड़िबो कि तमरो 4 रे एग्जाम अछि ना 6 रे एग्जाम अछि. ओके, तापर को सिलिया फ्लैजेला पिली फिमराई, which is the surface structure important for the attachment of the bacteria in the rock? Cilia, flagella, pili, fimbriae यांको भितरु को स्ट्रक्चर टा that is the bacteria को rock रे attachment करिया रे help करे. Cilia, flagella, pili, fimbriae, which is the surface structure important for the fimbriae. Ready? Then चलो cilia, flagella, pili, fimbriae, which is the surface structure important for the motility of bacteria. Bacteria जदी दिल्ली रु कटक मूवमेंट करिया चाहूची ताले कहा द्वारा मूवमेंट करिवो? If the bacteria wants to move from Delhi to Cuttack, which is the surface structure important to help the bacteria for the movements? कौन होबो? Flagella. Flagella. That is cilia present in human body or not? आम मानक बॉडी रे भी fallopian tube रे cilia देखा जाए. अच्छा, cilia flagella रा arrangement 9+2 or 9+0? What is the arrangement of cilia flagella? 9+2 or 9+0? कौन होबो? Cilia flagella रा arrangement टा 9+2 ना 9+0? कौन होबो? Cilia flagella arrangement विजय लक्ष्मी दास, that is 9+2. तापर मते को that is chitinous cellular chitin टा कहार देखा जिवो? The cellular chitin टा कहार देखा जिवो? algae ना fungi ना bacteria? फटाफट आंसर दियो. chitin cellular टा कहार? 9+2 ready, fungi. Perfect. तापर मते को सेल एनवलप जो चारटा तीनटा लेयर को नेके क्रिएट, दैट इज द ग्लाइकोकालिक्स, देन फॉलोड बाय सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो एई तीनटा लेयर को नेके हमें सेल एनवलप कहउचे. तो ग्लाइकोकालिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सेल एनवेलप टा प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाए ना यूकैरियोटिक सेल रे देखा जाए? कौन अब आंसर? सेल एनवेलप इज सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? That is prokaryotic cell or eukaryotic cell? Prokaryotic cell or prokaryotic cell? देर मते कहया देखो यदि ग्लाइकोकालिक्स इज लूजली अरेंज्ड, यदि ग्लाइकोकालिक्स टा लूजली अरेंज हेसी ताले हम ताको कोन कहबा? स्लाइम लेयर और कैप्सूल? इफ द ग्लाइकोकालिक्स इज लूजली अरेंज्ड इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर और कैप्सूल. कौन कहे ताको? इफ द ग्लाइकोकालिक्स इज लूजली अटैच्ड इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर और कैप्सूल. कौन हबो? ग्लाइकोकालिक्स तो सूडो लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड देन सेल वॉल देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. शुभंकर मिश्र परफेक्ट. दैट इज स्लाइम लेयर. रेडी. तापर मते को नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनिट. The amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute is called as stroke volume, cardiac output, ERV ना ZRV. कौन अब आंसर? शुभंकर ठीक अच्छी. स्लाइम. कौन अब आंसर? सुलग्ना, लिपिका, विजयलक्ष्मी, तृप्ति, सिप्रा. कार्डियक आउटपुट ना स्ट्रोक वॉल्यूम? The amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute. Amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute. Each ventricle per minute, that is stroke volume. Each ventricle per minute, that is cardiac output. But 8 jodi pachare jo during cardiac cycle each ventricle pump out 70 ml blood is called as stroke volume. This is stroke volume, but that is cardiac output. Stroke volume and the amount of blood to be pumped out by each ventricle per minute, that is called as cardiac output. Next question chalo. Stroke volume into heart rate equal to cardiac output. Which one of the following cellular part is correctly described? कोटा correctly described? कौन हबो देखो? Which one of the following is correctly described? Centriole, ribosome, lysosome, thylakoid. And site for active RNA synthesis those on chloroplast or rajor. देखो पढ़ो बोल से आराम से आसीबो क्वेश्चन. एग्जाम रे तमे जतले क्वेश्चन करिवो सबोळ पई पूरा आराम से कूल माइंड रे क्वेश्चन को पढिबो, क्वेश्चन को एनालिसिस करिवो, मन पकेव ट्राई करिवो, 100% आसीबो. आ सबोळ पई जतले एलिमिनेट करिवो ऑप्शन को देखि करिवो कि जदी करेक्ट इनकरेक्ट पड़ जायछि एटा इनकरेक्ट तो ता भितर तमे देखिया पड़िवो जदी एटा इनकरेक्ट अछि ताले को सेंटेंस रे एटा अछि तो एई बेला एलिमिनेट करि करि करिवो. ठीक अछि. डी कोन अछि ना सेंट्रियोल. हम जानि छे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ग्राना ऑफ थाइलाकोइड. क्लोरोप्लास्ट रो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रहिला ताका हम कहै थाइलाकोइड और थाइलाकोइड रो बॉन्च ता कहै ग्राना. तो जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ता कॉल्ड एज थाइलाकोइड. देन लाइसोसोम कोन? लाइसोसोम होची दैट इज ऑप्टिमल पीएच ऑफ एक्टिव पीएच 8.9. दिस इज द एसिडिक पीएच 4.5 होगा कथा. राइबोसोम कोन? दैट इज द साइट फॉर एक्टिव न्यूक्लियोलोस नहीं तो सेंट्रियोल. दिस द क्लोरोप्लास्ट राजर एटीएस कॉलम 1 ना कॉलम 2 वो करेक्टली डिस्क्राइब्ड. सेंट्रियोल साइट फॉर द आरएनए सिंथेसिस. थाइलाकोइड एटा ही हो. लाइसोसोम ऑप्टिमल पीएच भूल. राइबोसोम दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. राइबोसोम होची 70s. एबे हम देखिले पीसीएम प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया. पीसीएम रे 70 रखिबो दैट इज 70s होबा कथा. साइटोप्लाज्म रे 80s होबा कथा. सेंट्रल साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होची दैट इज न्यूक्लियोलोस. एटा न्यूक्लियोलोस. ताला आंसर होची डी. परफेक्ट. बढ़िया अछि समस्त कर. बढ़िया. डी बुझियला तो करेक्टली पचारचियो. तो सेंट्रियोल नो एटा दैट इज हम जते कहे एक्टिव राइबोसोम एक्टिव आरएनए सिंथेसिस किए करे न्यूक्लियोलोस एंड राइबोसोम टा क्लोरोप्लास्ट 70s साइटोप्लाज्म रे 80s होबा कथा. लाइसोसोम रो पीएच होची एसिडिक पीएच 4.5 होबा कथा एंड थाइलाकोइड ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. तो दैट इज मन रखिमा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम भी 70s, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम भी 70s एंड लाइसोसोम दैट इज एसिडिक पीएच. पायल यस सर क्लियर. श्रद्धा किटू बढ़िया. पूरा आराम से माइनरली पढ़ो. जम्मा भी डिमोटिव हुओनी. एग्जाम पर्यंत भलसे जहां भी जहां तो पढिছো ताको बार बार रिवीजन करो. काहे ना तुम जत्ते भी नुवा नुवा पाठ पढ़ी जीवो तो जदी रिवीजन न करिवो दैट इज भूली जाय चांसेस बहुत होछि. तो डेली ट्राई करो. जहां भी फिजिक्स पढुছো ताको रिवाइज करो. जहां भी केमिस्ट्री पढुছো ताको निजे भाबी लिखो. जहां भी बायोलॉजी पढुছো गोटे चैप्टर पूरा भाबिबो ताको निजे लिखिबो चैप्टर रे कोन कोन अछि.
देन क्वेश्चन लगा नुआ नुआ वेराइटी रो क्वेश्चन लगा क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो चलो which of the following structure is an organelle within the organelle already I have asked this question peroxisome mesosome endoplasmic reticulum ribosome organelle within the organelle को organelle टा generally organelle भितर भी मिले कौन हबो हमें जानी छे that is ribosome found not only in the cytoplasm ribosome टा not only in the cytoplasm रे केवल मिलेनी not only in the cytoplasm but also कोड मिलिबो that is the chloroplast रे मिलिबो माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलिबो कारण माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम बा 70s क्लोरोप्लास्ट रे मिलिबो माइटोकॉन्ड्रिया मिलिबो एंड आल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे मिलिबो that is ribosome found not only in the cytoplasm but also within the two organelle that is the chloroplast and the mitochondria D confirm I repeated D confirm करो लॉक किया जाए D ऑप्शन को शुभंकर श्रीतम सुहानी तुम घर कोठी विजयलक्ष्मी राइबोसोम राइट बिकॉज क्लोरोप्लास्ट भी गोटे ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया भी गोटे ऑर्गेनेली एंड ए ऑर्गेनेली भितर एटा ऑर्गेनेलीटा मिलुची सो दैट राइबोसोम को हम कहूचे ऑर्गेनेली विद इन द ऑर्गेनेली परफेक्ट तापर मते को मेसोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल रो एक्सटेंशन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन को कहा मेसोसोम मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनुपमा बढ़िया अछि प्रियंका परफेक्ट मेसोसोम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्ट्रिक्टली मन रखो मेसोसोम इज सीन इन कोउतरे देखा जीवो प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल मेसोसोम टा जनरली प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जीवो ना यूकैरियोटिक सेल रे देखा जीवो कोन आंसर मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल ना यूकैरियोटिक सेल आंसर कोन हो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन एंड प्रोकैरियोटिक सेल परफेक्ट सुलग्ना स्वरूप सुहानी शुभलक्ष्मी दीप्ति शुभंकर सटाइटा स्वागतिका तृप्ति विजयलक्ष्मी सुजाता पद्मालया गायत्री पायल असंत प्रोकैरियोटिक राइट प्रोकैरियोटिक आंसर होची दैट इज प्रोकैरियोटिक 83 वाचिंग दैट इज कोन हो प्रोकैरियोटिक देन नेक्स्ट हो दैट इज हमें को कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन सिंथेसिस करो प्रोटीन और लिपिड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will synthesize protein or lipid रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will synthesize protein or lipid विजयलक्ष्मी रंजिता लिपिका प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will synthesize protein or lipid स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will synthesize lipid and रफ एंडोप्लाज्मिक protein नेक्स्ट क्वेश्चन चलो राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सही क्वेश्चन पचाला जोटा सेंट्रियोल देतला करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रे कौन हम एक्टिवली राइबोसोमल सिंथेसिस न्यूक्लियोलस सुइसाइडल बैग क्या कहा जाए लाइसोसोम राइबोसोम 70s प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 80s नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम को नेकी ट्रू कोटा न्यूक्लियोलस समस्त श्रद्धा किटू रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम को नेकी ट्रू कोटा आनी हलो व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम कौन आंसर that is what is true about ribosome prokaryotic ribosome are 80s एट ट्रू पचार माने एट तो संगे संगे तुम आखि आगे भूल बाहरलानी ओ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोन दैट इज 70s these are composed of ribonucleic acid and protein हमें जानि छे राइबोसोम is made up of strictly मन रखो एटा गोटे वर्ष रो नीट रो भी क्वेश्चन दैट इज आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन राइबोसोम is made up of RNA plus protein these are found in only eukaryotic cell भूल
because ribosome prokaryote रे देखा जिवो and also eukaryote देखा जिवो prokaryote रे 70s eukaryote रे 80s these are self splitting intron of समय भूल that is option B is correct next question चलो nuclear membrane is absent in nuclear membrane is absent in कौन हबो nuclear membrane is absent in penicillium agaricus volvox nostoc सिप्रा डी प्राय पिला हो डेली मु देखुची जेमती कि गायत्री हो लिपिका हो स्वागतिका हो पायल हो शुभंकर हो अमित हो तृप्तिमयी सिप्रा सुहानी हरिहर हरिहर मन रही नाटा दैट इज कॉमन होची सर मो ना कहीं पढुना हरिहर सामंतराय देन तृप्ति अर्चिता विजयलक्ष्मी सत्यपुरी संजुला सुनयना दैट इज आवर स्टूडेंट अनुरुद्धा अमित विजयलक्ष्मी स्टूडेंट आमर अर्चिता तृप्तिमयी स्टूडेंट प्रियंका पायल स्टूडेंट स्वागतिका सुहानी रेडी तो दैट इज समस्त आम स्टूडेंट शुभंकर शुभस्मिता प्रियंका प्रियदर्शिनी रेडी ताले कौन हम दैट इज नोस्टोक नोस्टोक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सो जनरली जेहेतु प्रोकैरियोटिक एंड आम जानिछे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट माने प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस टा वेल डेवलप नुह आ न्यूक्लियस यदि वेल डेवलप नुह ताले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट थिबो ताले हमकु बाचार अछि प्रोकैरियोटिक सेल के नोस्टोक आ भितरे मते को पेनिसिलियम पेनिसिलियम इज algae or fungi पेनिसिलियम इज algae or fungi एक्स प्रियांशु श्रद्धा किटू आमर पिला पूरा नाटा मन अछि भूमिका श्रद्धा किटू नाटा पढि नथली बाकी आमर पिला सिप्रा विजयलक्ष्मी लिपिका आम स्टूडेंट भूमिका चलो कोन हबो algae ना fungi that is fungi okay देन वॉल्वॉक्स टा को एलजी ग्रीन एलजी ना ब्राउन एलजी ना रेड एलजी मन अछि ग्रीन एलजी ना ब्राउन एलजी ना रेड एलजी कहार एग्जांपल वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी ना फायोफाइसी ना रोडोफाइसी कहार एलजी कहार एग्जांपल दैट इज शुभंकर मु आपनको स्टूडेंट्स इट्स नॉट ए इंस्टीट्यूट इट्स आवर लवली एंड ब्यूटीफुल फैमिली विद्यासागर क्लासेस परफेक्ट तो जो माने विद्यासागर क्लासेस एसोसिएट अछंती यूट्यूब लाइव हो बा हमर ऑफलाइन कोर्स हो बा हमर ऑनलाइन कोर्स हो दैट इज लाइव सारा ही विद्यासागर क्लासेस तुम से जड़ित रहबो इन जो टाइप रो हेल्प दरकार दैट इज को कॉलेज रो एडमिशन रिलेटेड रे हेल्प हो कि एनी टाइप रो हेल्प दैट इज सर मु कोन आपन को स्टूडेंट नो यस मु ऑलरेडी हरिहर कहली नाटा मन अछि दैट इज तमे सब बेले को कि सर मो ना कहीं पढुना केते जनकर मन अछि जेमती आई थिंक श्रद्धा किटू डायलॉग आई थिंक बोधे फाइनली आंसर डी होना कोन आई थिंक क्लोरोफाइसी दैट इज क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी रो एग्जांपल होची क्लामाइडोमस वॉल्वॉक्स रोथ्रिस पायरोगेरा एंड चारा agaricus this is a mushroom and example of fungi next तो एनडीए रे गोटे छोटो एडवर्टाइज तुम पई तो तमर जदि को माने छोटो भाई की छोटो भौणी की सांग साथी थिबे समस्त सारा को स्टूडेंट यस राइट तो एनडीए पई भी स्पेशली जो पिला माने दैट इज चाहूतबे कि हमको एनडीए कोठी भलो प्रिपरेशन करा चाहिबो तो एनडीए पई भी विद्यासागर क्लासेस तरफ पूरा हमर कोर्स प्रोवाइड कराउची एंड तुम माने देखि परिबो हॉस्टल फैसिलिटी भी अछि जो भी तुम कोर्स एनरोल करा चाहो हॉस्टल अवेलेबल डेली टेस्ट लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अछि तो यूट्यूब रे तुम जाय कि विद्यासागर क्लासेस रो जो चैनल अछि सेते भी तुम देखि परिबो हमर क्लासरूम एंड जो लैब फैब अछि दैट इज हमर कंप्यूटर रूम अछि एंड लाइब्रेरी अछि सेडा भी देखि परियो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंगी को रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी रो एसोसिएशन को कोन रैपिड फायर टा चालू करिया लास्ट क्वेश्चन को रैपिड फायर करिया शिवानी सर मु यस शिवानी तमे भी विजयलक्ष्मी बढ़िया कौन हम अंकिता आम स्टूडेंट मूनलाइट समस्त आम स्टूडेंट एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंगी दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा परफेक्ट लिपिका सुहानी तृप्ति प्रियंका बढ़िया दैट इज माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंगी देन मत को कि among which of the following option can do photosynthesis आंको भीतर किए photosynthesis जनरली करि पारे फॉर्म माइकोराइजा ना which of the following option को या भीतर कोटा गोटे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज द शियर बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस करि पारे
लाइचेन टा कार कार एसोसिएशन एट कह दियो लाइचेन टा कार एसोसिएट दैट इज द algae प्लस फंजी algae और फंजी रो एसोसिएशन टा को हम कहया जनरली लाइचेन then next question a dikaryon is formed when dikaryon टा केतेबेले फॉर्म हुए स्वरूप algae plus fungi बड़े अछि dikaryon phase केतेबेले फॉर्मेशन हो dikaryon is formed when meiosis is formed the two haploid cells do not fuse completely cytoplasm does not fuse कोडा हबो dikaryon माने गोटे सेल रे टू न्यूक्लियस n plus n जोटा कि ascomycetes और basidiomycetes शो करे the two haploid cells do not fuse completely next question चलो एमिति क्वेश्चन आसीबो तो देखो एक्सपेक्टेशन तो करि परि हम एमिति क्वेश्चन आसीबो बोली बट ओयूटी रो तमे देखिछो जेहेतु ओडिसा लेवल रो एग्जाम हुए जेति कि सेंट्रल लेवल एग्जाम हो जे नीट हो कि सीयूईटी हो डायरेक्टली एनसीईआरटी रो क्वेश्चन उडा आसे बट जेहेतु ओयूटी टा दैट इज हमर ओडिसा गवर्नमेंट टा को एग्जाम कंडक्ट करछि तो तार त हम सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन करि परि एनसीईआरटी भितरु एनसीईआरटी बाहर रो भी किछि क्वेश्चन पडिबो हला तो आम 100 रू 100% क्वेश्चन के भी एनसीईआरटी रू हमें एक्सपेक्टेड करि परियानी कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय बट जेहेतु हमें दैट इज सब एग्जाम पई एनसीईआरटी को फॉलो अप करछे तो एनसीईआरटी को फॉलो अप करके चली की क्वेश्चन उडा प्रैक्टिस करेडा दरकार एमडब्ल्यू श्रद्धा किटू दैट इज द राइट फाइनली आंसर बी हबो श्रद्धा किटू कॉमन डायलॉग कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय कंटाजियम विवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय एमडब्ल्यू बिजनकी अच्छा देन मते को कि हु वाज द साइंटिस्ट हु सेड दैट virus is a infectious living fluid virus that means venom or poisonous fluid की कहितले डीजे फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डीजे इवानोस्की virus that means venom or poisonous fluid virus टा गोटे venom और poisonous fluid बोली की कहितले that is poisonous fluid बोली कहितले हमर इवानोस्की virus गोटे क्रिस्टलाइन लाइक स्ट्रक्चर बोली की कहितले क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बोली स्टानले कहितले virus that means contagium vivium fluid बा infectious living fluid बोली की कहितले contagium vivium fluid और infectious living fluid की कहितले that is infectious living fluid MW बिजनिका रॉबर्ट हु कोन डिस्कवर करथले को रॉबर्ट हु कोन डिस्कवर करथले हुआ कहूनी छाड़ी देछि कोन हो आंसर दैट इज रॉबर्ट हु कोन डिस्कवर करथले रॉबर्ट हु दीप्ति सरोज वेलकम टू सरोज पायल और रॉबर्ट हु कोन डिस्कवर करथले न्यूक्लियस डेड सेल रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथले न्यूक्लियस बट द डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक दैट इज द हम कहि परे डेड सेल डिस्कवर करथले रॉबर्ट हुक बा नॉन लिविंग सेल डिस्कवर करथले रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल डिस्कवर करथले एंटन वन लियोनॉग ready anton von leeuwenhoek that is the living cell and robert hooke that is the non living cell next question chalo the association between the mycoband and the phycoband is found in mycoband at 1665 perfect robert hooke 1665 रे non living cell by dead cell discover करथले बडे अछि अंकिता अनुपमा and founder of the cell of the god of the cell कौन हो दैट इज algae and fungi association हमें कौन कहछे सपोज दिस इज द algae and this is the fungi and algae and fungi association होची lichen and generally algae और fungi भितर की होची phycoband के mycoband मन रखिबो fm जो हमें गीत सुनेनी fm रेडियो fm 402 fm 306 fm धूम मिठा that is A for होची fungi M for होची mycoband बा हम कहि परिया that is FM trick रे मन रखिया phycoband होची that is the fungi and mycoband होची fungi FM then alternative मन रखियो phycoband algae बोलियो मन रहइबो lichen ठीक अछि that is this one is the algae and this one is the fungi and algae is smiling and the fungi is crying because algae and fungi association होची lichen and among the lichen which one is a phycoband and which one is a mycoband trick होची FM तो F for fungi M for mycoband okay next question
डिफरेंस बिटवीन द भाइरस एंड भाइरस एटा तुम पे होमवर्क रहला तो जो माने कमेंट रे जणेबो कुकू एफएम कहनी सुनिया और अपने लाइफ को बेहतर बनाए राइट तो सही रे मन रखो दैट इज एफएम होची फंगी एंड माइक्रोवेन सर भलो शॉर्ट फॉर्म रेडी ओके ठीक अछि तो एटा तुम पे होमवर्क एंड मु कमेंट देखिबी को माने कमेंट करछो कि न करछो तो चलो ये रहला तुमर एती क्वेश्चन एबे सर मैथ रो हो ना मैथ ना এটা ওইউটি ক্র্যাশ কোর্স ঠিক আছে তো क्वेश्चन हमरो एटी सरिला 20 क्वेश्चन थिला तो जनरली एंड 20 क्वेश्चन ने के आई थिंक हमें डिस्कशन भी 50 प्लस क्वेश्चन कहि सारछे एंड तुम माने ई क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कमेंट करियो एंड देखिया सर आज खाई की सोइबे ना यस यस ओके लास्ट तुम क्वेश्चन पचराबा दैट इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया 70s और 80s बड़ा बड़ा आंसर 10टा क्वेश्चन पचरे सारिया प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया 70s और 80s प्रोकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कितने 70s ना 80s 70s तापर मते को दैट इज सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल थ्योरी स्केल्डन एंड स्क्वान ना ओनली स्केल्डन कौन हबो स्केल्डन ना ओनली स्क्वान सेल थ्योरी फटाफट आंसर दियो पूरा शॉर्ट फॉर्म रे आंसर दियो जेते शॉर्ट फॉर्म हे परियो स्केल्डन एंड स्क्वान नेक्स्ट को कि सेल वाली जे यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल की कहतले स्केल्डन ना स्क्वान हु वाज द साइंटिस्ट हु सेड दैट प्लांट सेल रो यूनिक कैरेक्टर होची सेल वाल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल की कहतले स्क्वान कहतले देन आवर लास्ट टू क्वेश्चन दैट इज हमें जदी कहिया the movement of sperm is flagellar movement or ciliary movement of sperm is ciliary movement or flagellar movement धड़ा धड़ को movement of sperm is ciliary or flagellar ciliary movement or flagellar movement then मते को कि ciliary movement sperm रो movement that is flagellar movement तापर को which of the plant hormone responsible for the anti aging बा जदि हमें कौन सी साग फाग काटिक आनुचे तादरे को हार्मोनटा प्लांट हार्मोन स्प्रे कले बहुत दिन पर्यंत दैट इज सेटा पूरा सतेज होई रहबो ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन एथिलिन एब्सिसिक एसिड कोन हबो व्हिच इज कॉल्ड एज द एंटी एजिंग हार्मोन और व्हिच इज द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एज द एंटी एजिंग हार्मोन ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन एथिलिन एब्सिसिक एसिड फटाफट को फ्लैजेलर सरला नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑक्सीजन जिबरलिन एथिलिन साइटोकाइनिन आंसर इज साइटोकाइनिन व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड एज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन एथिलिन which hormone is called as the fruit ripening hormone धड़ा धड़ को हार्मोन को जनरली हमें फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहूचे एथिलिन ना जिबरलिन ना एब्सिसिक एसिड which hormone is called as the fruit ripening hormone एथिलिन कोकोनट मिल्क रे जनरली हमें को हार्मोन पाया ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन which hormone generally found in the coconut milk ऑक्सीजन जिबरलिन साइटोकाइनिन कोटा कोकोनट मिल्क रे पाया देखो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन गला जिबरलिन सॉरी एथिलिन and cytokinin गला anti aging hormone and that is coconut milk रे में पाया cytokinin like activity are seen in that is the coconut milk then मते को that is which hormone is called as the stress hormone को हार्मोन ता स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड ना ऑक्सीजन ना जिबरलिन स्ट्रेस हार्मोन that is कोन हबो फटाफट को स्ट्रेस हार्मोन का कहया स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड देन मूनलाइट ओके देन नेक्स्ट को कि सिलेंटरेटा एंड टेनोपरा दैट इज रेडियल सिमेट्री शो करियो ना बायलैटरल सिमेट्री शो करियो सिलेंटरेटा एंड टेनोपरा विल शो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री कोन आंसर सिलेंटरेटा एंड टेनोपरा रेडियल सिमेट्री ना बायलैटरल सिमेट्री सिलेंटरेटा टेनोपरा अंकिता बढ़िया अछि आ ना पढियोबनी धड़ा धड़ा आंसर दियो आ लास्ट 5 क्वेश्चन पचरे सारे रेडियल सिमेट्री देन मते को कि एकाइनोडोमाटा रो लार्वा स्टेज ता कोन शो करियो रेडियल ना बायलैटरल एकाइनोडोमाटा रो लार्वा स्टेज रेडियल सिमेट्री ना बायलैटरल सिमेट्री लार्वा विल शो द लार्वा ऑफ एकाइनोडोमाटा विल शो बायलैटरल सिमेट्री एंड अडल्ट रेडियल सिमेट्री तापर मते को कि फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम को फाइलम रो एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल प्लैटिहेलमिथेस सास्केलमिथेस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम Porifera Platyhelminthes, Ascylminthes, Annelida, Arthropoda. Flame cell टा कहार excretory organ? Flame cell is the excretory organ of
platyhelminthes. Then go ki that is nephridia is the excretory organ of Escherichia, Annelida, arthropoda. Kaharo excretory organ, kaharo excretory organ, that is the nephridia. Nephridia is the excretory organ of Annelida. Then go ki that is planaria possess true regeneration capacity. This is an example of platyhelminthes na Escherichia na Annelida. Planaria possess true regeneration capacity बा planaria को हमें जेमती काटिया तो that is again तार नुआ body formation है जो planaria possess true regeneration capacity. This is an example of platy ना Escherichia ना Annelida nephridia ठीक अच्छी and planaria true regeneration capacity, that is the platyhelminthes which is called as the roundworm. Platy ना Escherichia ना Annelida roundworm, that is Escherichia. Then go कि digestive system is complete from the platyhelminthes or Escherichia or Annelida. Digestive system कोड complete है उची platy ना Escherichia ना Annelida. Digestive system is complete from the Escherichia. Then go कि that is spiny body कहाँ देखा जीवो which phylum, the body of which phylum is spiny body. Platy ना Escherichia ना Echinodermata. Spiny body कहाँ spiny body generally कहाँ देखा जीवो Echinodermata. Ready. Then go कि water vascular system कहाँ देखा जीवो Platy ना Escherichia ना Echinodermata. Water vascular system, not water canal system. Don't be confusion between the water canal system and water vascular system. Water canal system is found in phylum Porifera and the water vascular system is found in Echinodermata. Gastrovascular system kaharo? Gastrovascular system platyhelminthes na Escherichia na Coelenterata na Ctenopora. Gastrovascular system by gastrovascular cavity. Water canal system Porifera and water vascular system that is Echinodermata and that is the Coelenterata show करिवो gastrovascular cavity. तो ये रहला तमर रैपिड फायर. द नेक्स्ट क्लास रे टू डिस्कशन करिया एंड नुआ नुआ क्वेश्चन आसिया. ठीक अछि चलो एंड एग्जांपल किछला देई दो Echinodermata तापरे सार दवा. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ Echinodermata? एनीवन Echinodermata एग्जांपल कार मन अछि? Echinodermata रे एग्जांपल को स्वागतिका थैंक यू. Echinodermata एग्जांपल कोन? सी कुकुम्बर, starfish, that is Asteraceous starfish, Echino sea urchin, Cucumaria sea cucumber, Ophiura, brittle star, Pilla apple snail, Pinctada piolostal, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish. ये सो कहार एग्जांपल? Pilla apple snail, Pinctada piolostal, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish. These are the example of mollusca. Rasping organ radula कार देखा जीवो mollusca. कहार बॉडी होची हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन को डिवाइड कराइछि, that is sea urchin, starfish. रेडी बढ़िया. चलो ये रहिला तमर क्वेश्चन एति की डिस्कशन करबा. नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिया जा रहिला 20 नंबर क्वेश्चन. तमे कमेंट रे जणैबो एंड कोन प्रॉब्लम अछि को चैप्टर तम रिक्वायरमेंट अछि तो सेटा कहइबो. देन से रिलेटेड हमें नेक्स्ट क्लास रे आनिया. चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. भल से पढ़ा पढ़ी करो. एति टाइम को भल से यूटिलाइज करो. चलो.